थे तब भी ले सकते थे, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरह ये एक और विकेट गिर गया और इंग्लैंड की कोशिशें भी जारी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हताशा ओढ़ लिए, विकेट नहीं गिर रहे थे, उसके बावजूद सही दिशा, सही लाइन की बॉलिंग, सही अनुशासन के साथ बॉलिंग करने की जो उनकी आदत है उस पर कायम रहे, और जब ये कायम रहे तो आखिरकार उसका फल भी मिला और विकेट अब मिल गए। तो इस तरह अब छठा विकेट गिर गया और भारतीय टीम मुश्किलों में पड़ गई और इंग्लैंड वापस लौट आया। जब लग रहा था कि 300 रन की अगर लीड हो जाएगी तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड की कोशिश ये है कि उतनी बड़ी लीड हो ना पाए और इसके लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, अदल बदल कर अपने बॉलर्स लगा रहे हैं। पहले तेज गेंदबाज लगातार परेशान कर रहे थे भारतीय बल्लेबाजों को, लेकिन हमने देखा आज जो विकेट गिरे, जडेजा का विकेट गिर गया और उसके बाद में रहाणे का विकेट जब गिरा तो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। रहाणे से बहुत निराशा हुई क्योंकि लग ही नहीं रहा था को किसी प्रकार का आत्मविश्वास उनके पास है। और वोक्स इसी बीच तैयार, नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और छोड़ दिया विकेट कीपर के पास जाने के लिए। और जो विकेट मिला था, गजब की बॉलिंग बहुत अच्छी। और देखिए, लोग कितना भी कहें कि स्पिनर्स को भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब इस तरह से जब आपको कम आंका जाए तब आप ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। Yes, Sushil, the drift that Moeen Ali got initially, the ball seemed that it is sort of wobbling in the air, and then pitched it. Virat Kohli was not sure about what to do. He had a full stride in, just kind of reminds you of the way Graham Swan used to bowl, and Moeen Ali got a fantastic wicket out there. बहुत अच्छा एक्शन है उनका, बिल्कुल सरल एक्शन है, गेंद को फ्लाइट करते हैं और ड्रिफ्ट थोड़ी बहुत जो भी मिले उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और विराट कोहली को अगर स्लिप में आप अगर स्पिनर विकेट लेता है तो मैं समझता हूं उसका दिल तो बड़ा खुश हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने बल्लेबाज को पूरी तरह से काफी हद तक बीट कर दिया है। और विराट कोहली का विकेट, वो अगली गेंद को ऑन साइड में खेला, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। ऋषभ पंत ने वोक्स बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और जब बॉलिंग करते हैं ना, मैंने देखा मोइन अली बॉलिंग जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा स्पिन करा रहे हैं, फ्लाइट भी करते हैं, लेकिन उसको सीधा रख देते हैं। बहुत ही चतुर और चालाक खिलाड़ी हैं। मैं तो कहता हूं कि काइये किस्म के बॉलर। 312 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। अगली गेंद, और ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और करीब करीब कमर की ऊंचाई तक आई थी। पीछे हटे, कलाई का उपयोग किया, खेला ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ बिना किसी रन के। तो अब जो स्कोर कार्ड है, जो 312 रन 6 विकेट के नुकसान पर आज आउट होने वाले खिलाड़ियों में सबसे पहले आउट हुए थे जडेजा, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, वोक्स 17। उसके बाद आउट हुए रहाणे, बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, वोक्स 0। और उसके बाद अभी कोहली आउट होकर वापस गए पवेलियन में ऑफ स्टंप के बाहर। अगली गेंद वोक्स की और वो छोड़ दिया, फिर से उसे खेलने की कोई कोशिश नहीं की, जिम्मेदारी ओढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, शार्दुल आए हैं ठाकुर बल्लेबाजी करने पहली पारी में, भले ही उनके टुल्ले लग गए लेकिन हर बार हो जाएं ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हैं तो बॉलर ही। उनकी पहचान एक बल्लेबाज के रूप में उतनी स्थापित नहीं है, लेकिन रनों की सख्त जरूरत है यहां भारत को। अगर ये लीड 270-275 की भी नहीं हुई तो भारत के ऊपर पराजय का संकट भी मंडरा सकता है। तो ये खेल बहुत ही दिलचस्प हो चला है। ये ऑफ स्टंप के बाहर फिर से, और ऋषभ पंत ने खेलने की फिर से कोई कोशिश नहीं की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की जरूरत भी नहीं थी, ओवर की समाप्ति। और स्कोर है 312 रन 6 विकेट के नुकसान पर दूसरी पारी में भारत, जबकि इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कि भारत की इस दूसरी पारी को जल्दी से निपटाएं, और भारत कोशिश कर रहा है कि कम से कम 300 रन की लीड, मैं लीड की बात कर रहा हूं, लीड जरूर ले लें। Yes, but India has achieved to get a lead of 213 runs, and Chris Woakes actually got a change of ends, but full marks to Moeen Ali, and he completely foxed Virat Kohli there. And the best part is when he bowled a delivery, the replays show that he actually used only his index finger and the thumb to kind of deliver that ball, which was a straighter one, not necessarily a complete doosra, which Ashwin or someone else does, but amazing. And look at the contrasting
varying emotions of Virat Kohli. He was pumping it up when the overthrow they got when both Virat and Rishabh Pant stole that couple of runs, and he was really very happy. He was pushing it and rubbing it into the opposition, but Moeen Ali got the better of him. Shardul Thakur gets the first ball outside the off stump of a new over from Moeen Ali, beg your pardon. He pushes that ball defensively in the covers. It was a vacant area. Rishabh Pant called for a single, and a quick run has been stolen. That will take India to 313 for the loss of 6 wickets. This test match has been quite interesting because I still remember yesterday when we were commentating, Sushil, Craig Overton, after he bowled the delivery, ran all the way till long off to stop the ball. Quite amazing. Moeen Ali round the wicket with a slip to Rishabh Pant, inviting him to drive, go for that expansive shot. But there are those the footmarks outside the off stump of Rishabh Pant, and he lets it go into the gloves of the keeper. It's a nice battle here. India lead by 214 runs. There's a forward short leg. This time on the middle and the off stump, nicely pushed into the mid-wicket zone. It's a vacant area, and a single has been taken. So for Rishabh Pant, when Moeen Ali is bowling, there is a deep mid-wicket, and there is also a long on, so that any big hits from Rishabh Pant can be taken care of. And Root now is also in a run-saving mode because he knows that he cannot let India go past 250-odd runs as far as the lead is concerned, because the average fourth innings score at the Oval is about 296, and England have chased about 200-odd runs on this surface earlier too. Next delivery over the wicket to Shardul Thakur. Moeen Ali keeps it just around that off stump, and Shardul plays that ball defensively. A slip in place in the form of Craig Overton. Very interesting to see a fast bowler in the slip area on a very regular basis, and Overton is somewhat of a specialist. 314 for 6. Next delivery, flighted one, trying to drive that ball. Good shot from Shardul, but it ends up with Joe Root at mid-off. No run out there. So Shardul is batting on 1, Rishabh Pant is batting on 13. The lead of 215, just not very comfortable. But you never know, smaller targets can also be defended. This is the wonderful game of Test match cricket. As Moeen Ali bowls, flighted straighter one. Shardul once again wanted to push it in that vacant short extra cover area. Both the batsmen thought of a single, but Johnny Bairstow was quick to go and intercept that ball and stop the batsman from taking any run. So 113 for the is the number of overs. The number of overs that have been bowled. 314 for the loss of 6 wickets is the score. But out of the 314, only 5 extras. Just goes to show the discipline and the tenacity with which the English have bowled. 3 leg byes and 2 no balls only. That has been the story till now. For the first 50 minutes in the first session, England had no chance whatsoever when Jadeja and Virat were playing so well. But then the picture has completely changed from that time, and India has lost 3 wickets. Virat, before he got out, there were 3 occasions when he edged the ball genuinely, but it fell short of the slip fielder, once before the third slip, once in front of the second slip, and then once in front of the first slip. So that has been the story. As Chris, in fact, Overton will replace Vokes' first ball just around that middle off stump, bouncing a bit after pitching, moving away. Rishabh Pant punches it towards covers straight to the fielder. Pant is batting on 13. A lovely day at the Oval for some wonderful cricket. In fact, the idea was that the Indian batsmen will keep pushing the English bowlers, make them toil hard, but that was not to be. Indians were possibly able to do that in the first 50 minutes, but not after that. 3 slips in place. Overton bowls to Rishabh Pant on the middle and the off stump, pushed back to the bowler. No run. India lead by 215 runs. And in this session today, the first session of day 4, 21 overs have been bowled. 44 runs have been scored by India, but England have got 3 big wickets. Thank you, Kshama, for the numbers. And about 15 odd minutes to go for the lunch break. This first session, certainly England have pulled back really very well, but India still have some hard work to do. Fuller length, trying to drive away from the body. The ball almost becoming a Yorker as Rishabh Pant, without any footwork, tried to reach it to drive it, and the ball just, he digs that ball out back to the bowler. That's what I can say. Overton bowling at about 125, 126 kilometers per hour, even though he hasn't got the wicket till yet, but he has been able to put the pressure from the other end, and he has been always involved in the game.
but Chris Wokes is the danger man. Slightly short, pulling that ball from outside the off stump. Good shot. But there is a fielder at short mid-wicket. Rishabh Pant was not able to put that ball in the gap, and that's why he could not get that run. A slight tad short, and Rishabh Pant actually pulled it, but Pant was slightly surprised by the pace and the bounce at which it came at him, and he couldn't really dispatch it really very well. On subcontinent wickets, Pant is very dangerous with this kind of strokes, but India 314 for the loss of 6 wickets. Here comes Overton. Fuller edged and one bounce to the second slip. This has been the story of the day. Probably now can the slip fielder stand a bit ahead? That's the case, but lucky there that the ball didn't pop after getting the edge of the bat of Rishabh Pant. नहीं, बिल्कुल बैट का बाहरी किनारा लगा और मुझे शुरू से लग रहा था कि क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं भारतीय बल्लेबाज, उनको ये सिखाया भी गया है, तकनीक भी यही सही है कि सॉफ्ट हैंड से खेलिए ताकि स्लिप फील्डर्स तक नहीं पहुंचे. तो स्लिप के फील्डर्स जब 4 कैचेस इस तरफ से जा चुके हैं और फर्स्ट बाउंस पर लिए हैं तो थोड़े आगे आए तो बेहतर. Right. Last ball of the over, angled across. Rishabh Pant lets it go into the gloves of Johnny Bairstow. End of 114 overs. And India are 314 for the loss of 6 wickets. They lead by 215 runs. Moeen Ali and Chris Wokes have been the bowlers who have damaged the Indian juggernaut, you can say. Indians were really playing very well. But then this is test match cricket. Half an hour this side, half an hour that side. It's the pendulum which keeps on rocking. But 215, probably still not enough. Of course, you can always think of or ask for anything, but India will really have to work hard. Root, on the other hand, as you said, is also devising strategies not to let this lead go beyond 250. नहीं, बहुत रूट की कप्तानी काफी अच्छी रही है और बहुत ही जिसको कहते हैं कल्पना शक्ति का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं. सही चेंजेस कर रहे हैं. नए ओवर की पहली गेंद और ड्राइव करने की कोशिश की बॉलर के ठीक पास से, लेकिन मोइन अली ने स्वयं अपने फॉलो थ्रू में उसे फील्ड कर लिया और वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर. 115वां ओवर चल रहा है. 215 रन से भारत आगे है. मोइन अली की अगली गेंद ये ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी. ऑफ ब्रेक, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई और शार्दुल ठाकुर ऐसे खेले जैसे कोई एक नियमित बल्लेबाज हो. बैट और पैड एक लाइन में दिया, बिल्कुल गेंद की स्पिन को दबा दिया और आराम के साथ खेल दिया बिना किसी रन के. अगली गेंद ये ऑफ स्टंप के बाहर यही करते हैं वो, ऑफ स्टंप के कुछ ही बाहर से किसी गेंद को स्पिन कराते हैं और किसी गेंद को सीधा कर देते हैं और एक्शन उनका वही रहता है. लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर चौकन्ने थे, होशियार, समझ गए थे इस तकनीक को और इस चालाकी को. आराम के साथ पुश कर दिया ऑफ साइड में बिना किसी रन के. ये अगली गेंद काफी स्पिन हुई और फॉरवर्ड शॉट लेग पर गई जरूर, लेकिन पैड पर लगने के बाद हल्की सी अपील. और अभी भी मोइन अली तो कह रहे हैं, जबकि डीआरएस टाइमर चल निकला है और वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बैट और पैड से लगी हो. और मोइन अली को लग रहा था कि शायद बैट से लगने के बाद पैड पर लगी, तो इसीलिए आखिर डीआरएस ले लिया गया है. तो रिव्यू में क्या आता है देखने की बात होगी. और मोइन अली चूंकि बॉलर खुद ही कह रहा है कि भाई मुझे लगता है कि ये भीतरी किनारा लगने के बाद पैड पर लगी थी और उसके बाद उछली थी, तो तुरंत ही रूट ने उनका कहा माना और रिव्यू लिया. तो ये अब जान अटकी रहती है ऐसे में कि क्या होगा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है ऐसे में. ये गेंद स्पिन हुई काफी ज्यादा, लेकिन बैट तो बहुत ज्यादा दूर. अभी तो बैट बहुत ही ज्यादा दूर, और बैट जो पैड पर लगा ना उसकी जो आवाज हुई उससे थोड़ा बहुत भ्रमित हो जाता है बॉलर की आवाज कैसी आई. लेकिन बैट से तो काफी दूर थी. निश्चित रूप से ये नॉट आउट कहा जाएगा. Will they look for the LBW? The ball pitching outside the off stump, impact is in line, but it's going down the leg side. So probably Moeen Ali was thinking whether it might just hit the stumps. England have only one review and they have lost it now. तो ये रिव्यू खत्म हो गया. अब एक भी बार अब रिव्यू नहीं ले सकेंगे वो. तो ये भी एक चिंता का विषय हो गया है जो रूट को कि सारे रिव्यूज खत्म हो चुके हैं उनके. अगली गेंद मोइन अली की ऑफर में स्टंप. बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रशंसा करनी होगी. भले ही एक ही विकेट लिया लेकिन 72 रन भी दिए, परवाह नहीं. लेकिन विकेट लेते लेते नजर आ रहे थे और बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे. 314 रन 6 विकेट के नुकसान पर.
ये अली की अगली गेंद और पुश की ऑफ साइड में कवर की तरफ और तेजी के साथ 1 रन की चोरी कर ली एक तरह से उन्होंने, क्योंकि आसपास कोई फील्डर ही नहीं था। तो तेजी के साथ रन दौड़ पड़े और समझबूझ और तालमेल बहुत अच्छा। ओवर की समाप्ति 315 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ये स्कोर पर्याप्त नहीं है। भारत अभी भी संकट के दायरे से बाहर नहीं हुआ है और ये टेस्ट मैच की दिलचस्पी हर तरह से बनी हुई है। किसी भी टीम को विजय प्राप्त हो सकती है, फैसला अभी भी हो सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं अभी भी कायम हैं इस टेस्ट मैच में, और ऐसी चीजें अक्सर टेस्ट मैच को बहुत ही रोचक बनाती हैं। असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट जैसा कहा जाता है, और किसी भी बड़े खिलाड़ी से आप बात कर लीजिए, वो हमेशा यही कहेगा कि टेस्ट क्रिकेट ही उसके दिल के सबसे नजदीक है और टेस्ट क्रिकेट को वो बेइंतहा प्यार करते हैं। और जो शास्त्रीय क्रिकेट के जानकार हैं या शास्त्रीय क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, वो तो टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इसका मजा इस मायने में भी ज्यादा है कि आपको एक और मौका मिलता है, दूसरी पारी भी खेलने को मिलती है, आप जवाबी हमला कर सकते हैं, फिर से उभर कर आ सकते हैं। और जीवन में भी तो यही होता है, कई बार हम पस्त हो जाते हैं, फिर उठते हैं और फिर आगे बढ़कर दिखाते हैं। 216 रन से आगे है। ओवरटन तैयार हैं गेंद करने के लिए, 2 स्लिप अब रख दिए गए। बॉलिंग कर रहे हैं ओवरटन। ज्यादा रफ्तार तो नहीं है लेकिन गेंद को ऊंचा उठाने में कामयाब, और इस बार लेग स्टंप से थोड़ा सा भटके तो लेग साइड में खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 1 रन ले लिया आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कोर हो गया अब 316 रन और शार्दुल ठाकुर 2 रन पर। तीसरा रन भी शार्दुल ठाकुर का, पंत खेल रहे हैं 13 रन पर और पंत सामना करेंगे। ऋषभ पंत ने इस श्रृंखला में बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। ओवल में पहली पारी में 9 पर ही आउट हो गए थे। ये लेग स्टंप पर थी और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, तो बैकफुट पर गए, आने दिया गेंद को, और फिर इतना वक्त मिला कि लेग साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेलकर 1 रन ले लिया। तो स्कोर 1-1 रन, हर रन का बड़ा मूल्य है यहां पर, क्योंकि ये जो आप अभी कमाई कर रहे हैं ना, ये इसको जब आप बॉलिंग करेंगे तब उस वक्त काम आएंगे। ये कहते हैं ना, इसीलिए अभी की कमाई बाद में काम आती है। 317 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारत 218 रन से आगे है। ओवरटन बॉलिंग कर रहे हैं। एक सिली मिड ऑफ भी खड़ा किया गया है और यहां पर आखिरी वक्त पर बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोल दिया था और स्टीयर किया था बैकवर्ड पॉइंट पर बिना किसी रन के। तो 2018 में तो मुझे याद है कि ओवल में उन्होंने अच्छे स्कोर खड़े किए थे और बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक्स खेले थे, लेकिन इस सीरीज में रंगहीन, स्वादहीन और फीके नजर आ रहे हैं। तो ये वक्त है कि यहां पर कुछ ऐसा कर दिखाएं कि उनके आलोचक खामोश हो जाएं। ये बढ़िया, बिल्कुल गेंद के ठीक पीछे आकर शार्दुल ठाकुर एक अच्छे बल्लेबाज की तरह खेलते हुए आराम के साथ खेल दिया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। मोइन अली ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ये टेस्ट मैच, तमाम संभावनाएं, तमाम दिलचस्पी इसमें निकल रही है और आप अपनी नजरें नहीं हटा सकते। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी सुने बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि पता नहीं कब तस्वीर का रुख पलट जाए। इस बार ऑन साइड में खेला, सुंदरता के साथ 1 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन सही वक्त पर मुड़ गए वापस, खतरे को पहचान लिया और तुरंत ही वापस आ गए। सामने से ना कर दिया गया था, अच्छा किया, अन्यथा यहां पर जोखिम था। मिड ऑन पर बहुत फुर्ती से फील्डिंग कर ली गई थी और तुरंत थ्रो भी किया गया था और निश्चित रूप से रन आउट हो जाते अगर आगे निकल ही जाते। क्रिकेट में यही तो होता है कि ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता है, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी और बाहर की तरफ निकलती हुई पैड पर लगी, ऐसा लगता है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पहुंच गई। 1 रन जरूर मिला। 318 रन अब ओवर की समाप्ति। Yeah, so 116 overs have been bowled. India
lead by 219 runs, and a very interesting phase of the game where India will have now to set the target for England when they come out to bat. Still 2 more sessions to go in the day, another 3 sessions tomorrow. So it's going to be a fantastic test match. And with the way things are going on, Shardul Thakur and Rishabh Pant have a lot of responsibility on their shoulders. Rishabh Pant batting on 14, Shardul Thakur batting on 3, and we'll have to see maybe a couple of overs before the lunch break. Moeen Ali will start a new over to Shardul Thakur, first ball outside the off-stump, nicely punching it off the front foot towards long on for a single. So slow and steady, India accumulating runs, but this is a very interesting phase of the game. As I said, lovely day, sunshine, no breeze, lovely batting conditions, but then the bowlers are also there setting traps for you, and Virat Kohli got out on a very beautiful delivery, completely trapping him. Moeen Ali got the prized wicket, but now 319 for 6. Round the wicket comes Moeen Ali with a slip to Rishabh Pant. He dances down the track. Anticipation by Moeen Ali. He bowled it a bit flatter and quicker and didn't give Rishabh Pant the length to go for that aggressive stroke. This is going to be an interesting one. Is it the calm before the storm? And storm can come from either side, with the bat or with the ball also. Around the wicket, Moeen Ali bowls very slow through the air, teasing Rishabh Pant, come and hit me. But Pant also completely understanding the situation, bat together, full stride in, and defends it very nicely. What a lovely game of cricket. Wonderful contest between the bat and the ball. 319 for the loss of 6 wickets is the score. 220 is what India is leading with. Moeen Ali into his 19th over, coming down the track, drives it through the covers. But once again, it was a flighted delivery. Moeen Ali saw Rishabh Pant dancing down the track, and he altered the length, because of which Pant could only drive it towards the covers. He has picked up a single that will take India to 320 for the loss of 6 wickets. 221 is what India is leading with. Shardul Thakur batting on 3 had a whirlwind innings in the first innings. Over the wicket now to Shardul, drives uppishly, good shot through the covers, and the ball is racing towards the extra cover boundary for 4 runs. What a shot! And this is a news on AIR Chauka, as the Indian fans get an opportunity to celebrate after the kind of damage which has been done in the last half an hour by the English bowlers. So that will take the score ahead, but Shardul Thakur continuing to play positive, continuing to play very nicely out here, and these runs are going to be very, very precious, because the story is still unfolding. The script is still being written, as 324 for the loss of 6 wickets is the score. This time outside the off stump, beautiful ball, didn't turn. Shardul wanted to go on the back foot, cut it, gets beaten. Johnny Bairstow collects it. Wonderful over from Moeen Ali. And India still working hard, trying to build up something. Now, the situation out here is such that we still have another 5 sessions to go in this test match. India ideally would be looking forward for a 300 plus kind of a lead, but 6 wickets have fallen, and now India will have to take this lead as far as possible. England, on the other hand, would like to keep it under 250, and that will be a very wonderful situation for them. But Joe Root really working out different strategies, plan A, plan B, plan C, and he's been using the bowlers' combinations really very well, be it with Wokes and Robinson, or now with Overton and Moeen Ali. He's trying out different combinations, as Overton will bowl the next one, last one before the lunch break. First ball outside the off stump, as it's on the good length spot, and it's been played defensively by Rishabh Pant. India still accumulating. They don't have enough capital to invest to have that startup in the last innings. But it's going to be very, very interesting to see how the English batsmen will come out and get the dividends from this particular track, because it looks like a wonderful batting track. Chris Wokes and Moeen Ali, the demolition men for England. India lead by 225 runs, this time on the middle and the leg stump. Pant works it towards the mid-wicket zone for a single, and that will take India to 325 for the loss of 6 wickets. Pant goes on 16. Shardul is batting on 7. And what's going to happen in this test?
It's going to be whatever may happen in this test. Definitely, it's going to be a memorable test match. Doesn't matter if it's for England or for India. But with the series squared at 1-all, India have a wonderful opportunity out here. But Joe Root and company are not going to give it so very easily. Shardul Thakur gets the ball. Lovely straight drive. What a shot! And there was a fielder at silly mid-off, there was a fielder at long off, and there was a fielder at mid-on, bisecting them, straight drive, like an accomplished batsman. He gets a boundary, and this is a news on AIR Chauka. A lovely, delicious straight drive. Full length delivery from Overton, bat absolutely coming down straight, and any coach would be so happy to see Shardul Thakur play such kind of strokes. Elbow up, lovely shot, beautiful timing, and with those 4 runs, the score goes up. Shardul goes into double figures. India 329 for the loss of 6 wickets. Can Shardul do something interesting before the lunch break? A slip in place this time outside the off stump, nicely pushed towards the covers. But there is a fielder out there in the form of Hamid. So no run on that occasion. Shardul batting on 11. India 329 runs for the loss of 6 wickets. What a test match this has turned out to be. India scoring 191 in the first innings after being put into bat after losing the toss. England replying with 290, a lead of 99. And now India 329 for the loss of 6 wickets. Overton, for his 5th delivery of the over, Shardul gets to the ball on the middle of the leg, hits the pads. It is going down the leg side, a bit quicker this time from Overton, bowling at about 130 kilometers per hour, and no run there. So one more delivery before lunch can be called, and we will move into our special program in the lunch break, where we will have our experts and our hosts, Geetanjali and Amit. But it's going to be a very interesting program at the lunch break. It's going to be called Dressing Room. The players will go in their respective dressing rooms, and we'll take you to our dressing room of the थे तब भी ले सकते थे, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो इस तरह ये एक और विकेट गिर गया, और इंग्लैंड की कोशिशें भी जारी हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने हताशा